गत इस समय कंगडूरी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्की माउंटेनियरिंग स्प्रिंट वुमेन्स का इवेंट। डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 एक और इवेंट में डीडी स्पोर्ट्स के सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कंगडूरी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आज से प्रारंभ हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के अंतर्गत अब एक और इवेंट आपके लिए। ये इवेंट है स्की माउंटेनियरिंग स्प्रिंट वुमेन सेक्शन का। जम्मू कश्मीर का बड़ा प्रतिनिधित्व है, बड़े नाम है इस इवेंट में जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुल मिला के 32 एथलीट्स हैं, पहले 8 एथलीट्स जम्मू कश्मीर के, ये उसके बाद 4 एथलीट और हैं। कुल मिला के 12 एथलीट्स हैं जम्मू कश्मीर के। दिल्ली से मोनिका और महाराष्ट्र से काम्या, ये वो प्लेयर्स हैं जो अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके अलावा लद्दाख से हैं लीना, उसके बाद सीआरपीएफ से 4 एथलीट्स हैं, प्रीति भी हैं उनमें, रेणु हैं, सेजल हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी साक्षी ठाकुर और सीआरपीएफ के 4 एथलीट्स, और ये है कुल मिला के 32, जिसमें कर्नाटक का प्रतिनिधित्व दीप्ति शुक्ला करेंगे। उत्तराखंड की ओर से 3 एथलीट्स हैं, जिसमें सरोजिनी एक हैं। और ये अब एथलीट्स रेडी। इसकी माउंटेनियरिंग जो बहुत ही तेज इवेंट होता है और शॉर्टेस्ट इवेंट में जिसकी गिनती होती है, जिसे स्टार्ट करने के लिए ऑफिशियल्स स्टार्टिंग पॉइंट पर, और कुल मिला के 32 एथलीट्स हैं जो अपने अपने यूनिट्स का, अपने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खेलो इंडिया के इस विंटर गेम्स 2025 जो 5वां संस्करण है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स की शुरुआत 2020 से हुई थी। अभी तक 4 बार इन खेलों का आयोजन हो चुका है और ये 5वां आयोजन है जो इस समय चल रहा है दूसरे चरण में। पहला चरण इसका संपन्न हुआ था लद्दाख में, जहां 19 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अलग अलग संस्थान की टीमें थी। लद्दाख ने 4 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में पहला स्थान अपना बना के रखा था पहले चरण में। और ये दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, और ये है वादियां जहां पर बर्फबारी हुई थी और जिसके कारण एक अच्छी परिस्थिति इस विंटर गेम्स के लिए उपस्थित हुई। और ये ट्रैक जो आपको नजर आएगा, ये तैयार किया गया है इस इवेंट के लिए। और ये कोर्स जिस पर मुकाबला शुरू होता हुआ, और इन एथलीट्स को अपने स्की के साथ चलना पड़ेगा। लगभग 300 मीटर तक आपको जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। जैसे भी आप कंप्लीट करें उसके बाद ये देखें, आप दौड़कर कुछ जो एथलीट्स हैं वो इस इवेंट को कंप्लीट करने की चेष्टा कर रही हैं, शुरुआत की है उन्होंने। और बाकी जो एथलीट्स हैं धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ के अनुसार वे आगे बढ़ रही हैं। डीडी स्पोर्ट्स की पूरी टीम इस प्रसारण को आपके लिए लेकर आई है। इस समय गुलमर्ग के इस स्थान पर जो कांगडूरी है गुलमर्ग में, यहां पर यह इवेंट आयोजित किया जा रहा है। आज पहला दिन है। इसके पहले मेंस सेक्शन का इवेंट हुआ था इसकी माउंटेनियरिंग का, और अब वुमेन सेक्शन का जो सबसे शॉर्टेस्ट इवेंट कहलाता है, जिसमें लगभग 300 मीटर तक इन एथलीट्स को पैदल या दौड़कर, जैसे भी आप वो 300 मीटर कवर करें, वहां पहुंचना पड़ता है। उसके बाद सेकंड फेज रहता है, जहां पर आपको अपने स्कीज निकालने पड़ते हैं, उन्हें अपने कंधे पर रखकर या कैसे भी आपको उसे कैरी करके सेकंड जो फेज रहता है उसे कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद वापस जब सेकंड फेज आप कंप्लीट कर लेंगे स्कीज को अपने साथ कैरी करके, थर्ड फेज में आपको ढलान पर वापस आना होता है। ये एक चढ़ाई है जिस पर आपको चलना पड़ता है। और उसके बाद जब रिटर्न आएंगे तो आपको वो कोर्स में जिगजैग जो कोर्स बनाया गया है उसमें अपना बैलेंस बरकरार रखते हुए इसकी माउंटेनियरिंग के इवेंट को कंप्लीट करना होता है। तो शुरुआत हो चुकी है वुमेन सेक्शन की। वुमेन एथलीट्स धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार इस बहुत ही दुष्कर और कठिन इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं जो स्की माउंटेनियरिंग कहलाता है। आपको सीधे जाना है। इसका एक दूसरा पार्ट रहता है जो वर्टिकल
स्की माउंटेनियरिंग का होता है, जिसमें लगभग 1.5 किलोमीटर का एक कोर्स रहता है, जिसमें आपको ऊपर की तरफ जाना होता है। केवल एक साइड का वो इवेंट होता है, और ये इवेंट जो स्प्रिंट का है वो बोथ साइड रहता है, यानी आपको पहले चढ़ाई पर जाना होता है, उसके बाद उसी चढ़ाई से आपको नीचे आना पड़ता है और अपने इस इवेंट को कंप्लीट करना पड़ता है। कुल मिला के 32 एथलीट्स वुमेन स्प्रिंट के इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। सुबह मौसम बहुत सुहावना था, हालांकि मौसम अभी भी सुहावना है। पूरी तरह से बादल साफ थे और अच्छी खासी धूप खिली हुई थी, लेकिन जो गुलमर्ग की परिस्थितियां रहती हैं वो पल प्रतिपल बदलती रहती है। इस समय सूर्य देवता कहीं पर नहीं है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जिस कारण हवा का बहाव भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो पहाड़ पर जब चढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए स्की माउंटेनियरिंग के इस वुमेन स्प्रिंट में ये 32 प्रतिभागी जो अलग अलग राज्य से, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से और अलग अलग यूनिट से अपने संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने संस्थान का गौरव बढ़ाने के लिए। पहला चरण जो संपन्न हुआ था लद्दाख में, जिसमें 19 टीमें थीं, और जिस प्रकार से भारत सरकार सपोर्ट कर रही है विंटर गेम्स का, और यही वजह है कि 2020 से पहली बार विंटर गेम्स का भी खेलो इंडिया के तहत आयोजन किया गया था। पहले 3 आयोजन जम्मू कश्मीर में हुए थे, उसके बाद चौथा आयोजन मिला जुला रहा था, जिसमें लेह और गुलमर्ग में आयोजन हुए थे। और इस बार जो 5वां आयोजन हुआ है वो भी मिला जुला आयोजन है, क्योंकि लेह लद्दाख को भी एक बार फिर से मौका दिया गया और उनके साथ गुलमर्ग को जोड़ा गया इस विंटर गेम्स के आयोजन के लिए। तो 5वां संस्करण जो 4 दिनों तक चलेगा, जिसका दूसरा जो फेस है वो 4 दिनों तक चलेगा, जिसके तहत पहला इस समय दिन है आज 9 तारीख को। कुल मिला के 12 तारीख तक यहाँ इवेंट आयोजित होंगे। और जिस प्रकार भारत सरकार ने सपोर्ट किया है वो एक अलग ही कहानी है, क्योंकि फरवरी में जब एशियन विंटर गेम्स का आयोजन चीन के हर्बिन शहर में हुआ था, तब भारत का एक बहुत बड़ा दल वहां पर गया था और इसे पूरी तरह से स्पॉन्सर किया था, यानी सरकार की वित्तीय सहायता थी। तब भारतीय दल ने पहली बार विंटर गेम्स में वित्तीय सहायता, भारत सरकार की वित्तीय सहायता के साथ उसमें हिस्सा लिया था। वुमेन स्प्रिंट, स्की माउंटेनियरिंग, और धीरे धीरे अपने पहले फेज को कंप्लीट करते हुए इस कोर्स में 32 एथलीट्स, देखना है कौन इस स्की माउंटेनियरिंग के स्प्रिंट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतता है। ऑफिशियल रिजल्ट जब हमारे पास आएगा तब हम आपको उसकी जानकारी देंगे। इस इवेंट से पहले पुरुष वर्ग का स्की माउंटेनियरिंग का स्प्रिंट इवेंट संपन्न हो चुका है और ये एथलीट्स धीरे धीरे पहले फेज को कंप्लीट करते हुए, और जैसे जैसे पहला फेज कंप्लीट होने की तरफ आ रहा है, मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं अर्जुन चौधरी। अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Damodar, and a warm welcome to our viewers on Doordarshan Sports. We can see the athletes right now traversing uphill. This is ski mountaineering, also called the women's sprint. And the entire length of the ski mountaineering for women is 800 meters. For men, it was 1.5 kilometers earlier. And we can see the vast expanse of snow right now, which is why they're wearing alpine ski and the poles as well, because it's flatter. And you can see the wedge also in front of their ski. And they're also using the diagonal strides to go uphill. It's a very energetic exercise, requires a great deal of fitness as well. And what we've seen so far is it has military applications as well. So you have the Jammu and Kashmir Sports Council, which is the organizing committee effectively for the winter games here at Gulmarg, Kashmir, where the second leg of the winter games is being held under the Khelo India banner. And you can see right now that the uphill slope can be quite tiring for the skiers. That is why it's called ski mountaineering.
We are at the base of the Afarwat Peak. At the top of the Afarwat Peak is 13,000 feet above sea level. And just to give you an idea of the different types of skiing events, so when you go uphill, it's called ski mountaineering. When you're coming downhill, it's called alpine, which is why you have two types, slalom and giant slalom, where at speed you're able to traverse downhill. But this is uphill, and it's always difficult. 800 meters is the entire length of this ski trail, which has been specially groomed by grooming machines and manually as well, to ensure that the participants here are able to go smoothly, even though it's quite tiring, Damodar. And we can see right now that the women participants are trying to ensure that they clock the best possible time. We had the Nordic events earlier, which was at the base. That's your mascot, Sher-e-Shan, the snow leopard, which is a very endangered predator of the peaks here of the Himalayas. So these are the Afarwat peak. You can see traversing by the skiers as they go uphill. And it's all part of the Pir Panjal mountain range, eventually a part of the Himalayas, the Western Himalayas as we call it. The Himalayas extend from the east of India all the way to the west of India, into Pakistan as well. So if you're on the gondola, you can see an overview of the Nanda Devi, for instance, which is one of the highest peaks of the world. You can see the line of control as well. And let's not forget that the Afarwat Peak and its base area, the ski area as we call it, where all the events are taking place. So you have the ski mountaineering taking place as well, and along with that the alpine events, which is downhill. Plenty of effort there, and technique is also required. You can see the poles which is dug into the snow, and for the proper conduct, the technical conduct of the winter games, you need at least 3 to 4 feet of snow above the rocky surface. And we had the opportunity also speaking to the national coach for winter sports, skiing specifically, Mehraj Uddin, who said that you need hard snow and then you need soft snow as well for proper skiing. So all the conditions are right now for the winter games here, the Khelo India Winter Games 2025, the second leg which is being conducted here under the overview of the Jammu and Kashmir Sports Council, the Sports Authority of India. But the technical conduct is all about these technical parameters. And unless the conditions are right, which is right now, you cannot conduct the winter games here. So the first announcement for the winter games was cancelled in the month of February. But because of the conditions which have improved, and you can see the beautiful mountain range, the Pir Panjal mountain range, you can see the birch trees and the pine forest as well, and the vast expanse of snow. This is a designated ski area for ski mountaineering. Beautiful conditions, and Kashmir clearly is a very beautiful part of the J&K Union Territory, the Jammu and Kashmir Union Territory, which is hosting the second leg of the Khelo India Winter Games 2025. We can also see the markers here, the flags, to designate where the skiers are supposed to traverse. And that's another view of the cable car rides. You can see the long wires as well, where the cars traverse. So we are right now at slope A of the Kangduri slopes, phase 1 as it's called. As you go even further uphill, you go into phase 2. So this is ski mountaineering going on right now, and they have to stay within the gates as it's called. Multiple participants here for ski mountaineering, all time-based, and the officials are taking note of the bib numbers of each participant. There is also sensors attached to it to calculate the exact time taken to complete 800 meters for women and 1.5 kilometers for men. So Damodar, it's a very exciting venture here, the Khelo India Winter Games, into its second leg. The first leg was in Ladakh, Leh, where we saw ice hockey and speed skating as well. We saw the long track at Gupul Lake, the short track at the NDS Stadium.
And Ladakh right now is leading the medals tally. Indian Army, of course, won the title last year. They're in 6th position right now. And coming into Gulmarg for the second leg, clearly they would want to improve the medal tally and ensure that they go up. The first 3 editions, Jammu and Kashmir were the title holders. So they're all fighting for the top spot here in the second leg. बिल्कुल अर्जुन, और जिस प्रकार से तैयारी की थी लद्दाख ने, पहले तो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की और उसके बाद उनके प्लेयर्स ने भी, उनके एथलीट्स ने भी बहुत अच्छी तैयारी की थी। और यही वजह रही कि जो पहला चरण था वो लद्दाख ने सबसे आगे रहते हुए कंप्लीट किया है। और यहाँ भी वे तैयारी करेंगे कि ये सेकंड जो राउंड रहेगा उसमें भी वे अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। वुमेन स्प्रिंट स्की माउंटेनियरिंग का सबसे तेज गति वाला इवेंट जिसे कहते हैं, और इस समय जो एथलीट्स हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ाई पर जा रहे हैं। उसके बाद अपने स्कीज उतारेंगे, उसके बाद उन स्कीज को लेकर वे आगे बढ़ेंगे। सेकंड जो पार्ट रहेगा उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रिटर्न जब रहेंगे, वापस जब आएंगे इस पहाड़ी से, तब एक जिगजैग जो कोर्स बनाया गया है उस कोर्स पर अपने कंट्रोल के साथ, अपनी स्पीड के साथ उस इवेंट को फिनिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनकी टाइमिंग बेहतर हो, बेस्ट टाइमिंग हो, ताकि वे अपने प्रदेश के लिए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अर्जित कर सकें। कुल मिला के 32 एथलीट्स हैं जो इस वुमेन कैटेगरी में, वुमेन स्प्रिंट के इस इवेंट में भाग ले रही हैं। और सबसे बड़ा दल जम्मू कश्मीर का जो मेजबानी कर रहा है 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की। मौसम बहुत अच्छा, और यही वजह है कि मौसम अच्छा होने के कारण इस इवेंट को, जैसे ही मौसम यानी अनुकूल हुआ, तब इस इवेंट को आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा। उसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत का खेल मंत्रालय, जो खेलो इंडिया के माध्यम से जो युवा एथलीट्स हैं उनके लिए एक अच्छा मंच तैयार करने में सफल रहा है। और ये देखें आप, सबसे पहले कंप्लीट करेंगे फर्स्ट राउंड को, यानी जहां पर आपको अपने अब स्कीज उतारने हैं और उन स्कीज को लेकर सेकंड जो क्लोजिंग रहती है, जहां पर आपको पहुंचना पड़ता है उन स्कीज के साथ, वहां आपको जाना है, फिर आपको अपने स्कीज पहनने हैं। तो फर्स्ट एथलीट जिन्होंने इस कंप्लीट किया फर्स्ट फेस को, वे अब स्कीज को अपने कंधे पर रखकर, आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। और सेकंड एथलीट भी ज्यादा उनके बीच डिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस जब आप पदक मंच पर पहुंचते हैं तब कितना नजदीक होता है या बदलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। Well, we had the Nordic events covered earlier, men and women's. The men was for 10 kilometers and the women was for 5 kilometers. And we saw that there were officials from the IISM, the Indian Institute of Skiing and Mountaineering there as well, along with the Indian Army officials, because this is a very important part of ensuring security for India. Even though right now the internal security for the Khelo India Winter Games is being conducted by the Jammu and Kashmir Police and the CRPF, the Central Reserve Police, the paramilitary arm for security as far as J&K is concerned. But it's a very important part of ensuring that they're able to provide protection to the people of Jammu and Kashmir. And they're trained at the IISM, where they're taught techniques of ski mountaineering, how to traverse, how to use a diagonal stride, how to come downhill, how to go cross country as well, all part of ensuring that the borders are properly secured as well. So we can see right now that this is all part of the sport of women's sprint, ski mountaineering, where you're going uphill, but it has applications for military purposes, for ensuring security for Jammu and Kashmir as well, which is why it is such an important part of the Winter Games here. You have the line of control also with the Pir Panjal range, and you have the Indian Army along with the Indo-Tibetan Border Police to ensure the safety and sanctity of the Union Territory of Jammu and Kashmir. So skiing, skiing mountaineering, being able to carry out alpine skiing, Nordic skiing, all of it is a very important part of ensuring that you are able to traverse through these mountain ranges on foot.
So the women's sprint is taking place right now, and as Damodar had mentioned earlier, that you go uphill for 800 meters and then you take off your skis and you carry the poles on your back and go into the second phase, which is all part of endurance as far as ski mountaineering is concerned. We have the Kangduri slopes, slope A in fact, where this event is taking place. And you can see the drone cameras also, very important part of Doordarshan sports coverage, to see where the gates are and what the skiers are doing. It's a vast expanse of snow. This is a ski area, and for proper coverage of it, we can also see the birch trees. And Damodar is a very important part of the housing projects here. They use birch trees to build houses here. And even the hotels that we are staying at, they made of wood. They made of birch wood. Pine trees also found here. And because Kashmir has 4 seasons, you have the winter season going on right now, which starts in November, December, and continues into January and February. Of course, there has been late snowfall, which is why the Khelo India Winter Games in the second leg was delayed. It was not in the month of February, but it is now in the month of March, from March 9 to March 12. We also have the opening ceremony today. And that's another overview of the ski mountaineers as they traverse uphill. And you can see at both sides where the flags are in blue and red to ensure that this is the trail that they have to walk through after they take off their skis and carry the poles on their back. The Jammu and Kashmir Sports Council is part of the organizing committee. We're into the 5th edition of the Khelo India Winter Games, and what we're seeing is more diversity in terms of location and venue as well, because it's only in specialized areas where you find snow. Ladakh, of course, the temperatures are further down, so you have ice formation there, but there is a snow formation here, 3 to 4 feet. And the important part as far as the Ministry of Youth and Sports Affairs is concerned is that they want these slopes to be FIS approved, which is the governing body for skiing. And right now they're still getting their act together to ensure that these are FIS approved slopes. You had the Winter Olympic Games early in Beijing, China 2022, and the next Winter Olympic Games is in 2026 in Italy, Milano Cortina Ampezza, which is going to host the Winter Olympic Games. And already there have been some qualifications for the India team that's going to go and take part in the Winter Olympic Games. So usually your typical viewer understands the Summer Olympic Games. These are the Winter Games, which is taking place right now. And the endeavor of the Government of India is to ensure that India has all-round participation in both the Summer Games and the Winter Games as well. So we can see the red flags here, and everything is being clocked in terms of timing. We had mentioned earlier about the sensors attached to ensure accurate reading of the timings. We can also see some competitors practicing because the alpine events are also going to take place. They're going downhill, and you have snow only for 3 or 4 months here in Kashmir. And that's another challenge for the sporting authorities, because in places like Alaska, in places like Italy, you have snow sometimes 11 or 12 months a year. So that gives them more time to practice. And the uphill is relatively easy as compared to downhill. You also have the Directorate of Health Services here to ensure medical support. And NADA, the National Anti-Doping Agency. All the athletes are being tested to ensure they're dope-free, because this is all part of endurance and fitness as well, to ensure that the Olympic standards are being maintained. Damodar, we're also in the middle of the tourist season right now, and the cable cars are full of tourists, all wanting a chance to go uphill and come downhill through the slopes. Snowboarding is also a very important part of the Winter Games. This is something that's come out of the Summer Games in the US, where you have skateboarding, and from that they've adapted it to snowboarding, where the surface is snow. So you have snowboarding also. The skis are also a board, but which is attached to both the feet. And we can see right now
a technique while they're going downhill. This is called wedging, where both the skis are coming together, and the idea is not to fall, but sometimes you lose your balance as well as the skier is going downhill. There he's keeping it parallel, but the challenge is whether he can wedge it into a V so that he can reduce the speed, control the speed, and come downhill without falling or getting injurious as well, Damodar. जी बिल्कुल। और तकनीक, चाहे आप कोई भी खेल में हो, आपको उस तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना आना चाहिए। और जितना आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, जितना आप अभ्यास करते जाते हैं, उतना आप परिपक्व होते जाते हैं। और यहाँ अब वापसी जो तीसरा फेस रहता है, उसके तहत पहले फेस में आपको चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता है, फिर उसके आप सेकंड फेस में आपको अपना स्कीज उतार कर उन्हें कंधे पर लेकर चलना पड़ता है। और ये तीसरा फेस जिसमें आपकी स्पीड बढ़ जाती है, नीचे आते टाइम आपको स्कीज का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ देखें आप फिर से जो एथलीट्स हैं, जैसे जैसे वे कंप्लीट करने वाली इस पोजीशन में आती जा रही हैं, वैसे वैसे बैलेंस उनका उतना अच्छा नहीं रह पा रहा है। और यही एक खासियत है इस खेल की, क्योंकि आप जब ऊपर जाते हैं तो बहुत सी थकान होती है, और जब आप सांस लेते हैं तो वो ठंडी हवा आपके फेफड़ों में जाती है, वो भी आपको बहुत चैलेंज करती है कि आपने कितना एंड्योरेंस किया है, कितनी प्रैक्टिस की है। और ये देखें आप, एक और एथलीट फिनिशिंग पॉइंट की तरफ जिगजैग कोर्स बनाया गया है, और उस कोर्स पर धीरे धीरे फिनिशिंग पॉइंट की तरफ देखना है कौन इस वुमेन स्प्रिंट के स्की माउंटेनियरिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ये देखें आप, एक तरह से बहुत बैलेंस के साथ उस कोर्स में आगे बढ़ती जा रही हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर पहुंचे एथलीट, उसके बाद अब वापसी इस कोर्स पर, और देखना है स्वर्ण पदक किसके नाम पर जाता है। इसके पहले मेन सेक्शन का स्की माउंटेनियरिंग का ये स्प्रिंट इवेंट संपन्न हो चुका है, उसके रिजल्ट भी हम आपको अभी कुछ देर में बताएंगे। और ये देखें फिर वही बैलेंस बरकरार नहीं रख पाने वाली स्थिति। जब आप नीचे आते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है आपको, आपकी तकनीक पर विशेष रूप से बहुत ध्यान देना पड़ता है, और ऐसे में आपके घायल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। Well, Damodar, they are using the alpine skis right now, and it's very important to use a heel when you are coming downhill. How you're able to control the heel, which is why you have these binders, and whether they can free the heel or not, that's the art really of downhill skiing. And what we can see right now is whether they can sidestep or not, whether they can wedge or not, all in order to reduce speed and being able to maintain the balance at the same time. Also called snow plowing sometimes when you're really trying to reduce speed. And we can see right now that the skis are parallel, they're turning as well. There is some element of telemark skiing as well, where you're able to manipulate your heels in the benders of the ski that you're wearing, which is why they're wearing alpine ski gear. In the Nordic events, what we saw is that it tends to be fixed. The benders are fixed. There is not all that much heel movement. And this is downhill. And this is the finish line where it's being clocked as well. The women's event that's been taking place right now, the women's sprint, and a happy sprinter bearing bib number 102. So once again, the course is being marked by flags, by banners, to ensure that there's proper guidance for the trail, how well groomed it is, how well cut it is. And we can see the drone camera right now taking us through that trail. And this is another ski mountaineer sprinting downhill now, and you can see that they are employing the wedge technique, also known as snow plowing, but losing her balance in the process. But because the foot benders are loose, it's easier for them to fall without injuring themselves, even against the skis that they are wearing. And that is why the alpine skis are such an important part of the gear. So we are here, live coverage on Doordarshan Sports, Gulmarg, where ski mountaineering, a sprint for women is taking place. There are no heats. It's all
time bound, all being clocked. And again, losing their balance, because there is always that intensity when they see the finish line to lose their focus. And that's what happened. This is where experience matters, Damodar. Why you're so keen to increase speed, but it's all about control. And skiing is one such sport. जी हाँ, और कोई खिलाड़ी अपने जो स्पीड है उसे इंक्रीज नहीं करता है, वो जब थोड़ा सा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो समय आता है जहां पर कंट्रोल लूज होता है, और तब आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश में लगते हैं और वहां से आप वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और यदि कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखें, एक और फिनिशिंग पॉइंट की तरफ आते हुए एथलीट्स, 32 एथलीट्स थे जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया वुमेन सेक्शन में, और सफलतापूर्वक संपन्न किया अपने इस इवेंट को। देखना है क्या पोजीशन पर वे आई हैं। और ये थे वुमेन स्प्रिंट। Menka Gunjal of Uttarakhand in first place, Sakshi Thakur of Himachal in second place, and Natasha Meher of Himachal in third place. 24.44, 24 minutes and 44 seconds, .01 is Menka Gunjal's timing, who is in first place from Uttarakhand. Sakshi Thakur from Himachal, 25 minutes and 14.09 seconds. And Natasha won the bronze medal of Himachal Pradesh. So, the Uttarakhand winning the gold, and two Himachal Pradesh participants winning the silver and the bronze medal. And that will certainly help the medals tally as well. From what we can see is with Union Territory Ladakh leading the medals tally from the Khelo India Winter Games first leg. We now have the Indian Army in 6th place, but let's not forget that Tamil Nadu is in 2nd place as well in the overall tally. And we can see Himachal, which has its mountains, which is right now in 9th place. So I'm sure these medals will add to their account. They have two bronze medals from Ladakh, and having won a bronze and a silver here will go a long way in their medal standings. Ladakh in first place, Tamil Nadu in second, Maharashtra in third. But those are the figures for the Khelo India Winter Games in Ladakh. We are in Gulmarg right now, so the count will start afresh. And another skier has finished the finish line wearing bib number 104 here at Gulmarg at the Kangduri slopes, slope A, where ski mountaineering is finally coming to an end. We had the men's event earlier of 1.5 kilometers going uphill, then taking off their skis and gear, going up to a certain marker and then coming down. So what we have seen is a challenge is a downhill skiing, and this is where alpine skiing techniques and skill is so important. We be able to maintain your balance and speed using the ski and the poles effectively in that specially cut trail when you reach the finish line. We can see officials, of course, of the Jammu and Kashmir Sports Council as well, all ensuring the proper conduct of the Khelo India Winter Games. You also have members from SAI, the Sports Authority of India, for the technical conduct of the games. But what's important is that the second leg of the Khelo India Winter Games is actually taking place. There were concerns earlier that because of climate change, the snowfall would not be consistent. It would not fall sufficiently enough, but it has. And we can see the standings right now. Menka Gunjal of Uttarakhand in first place, wearing bib number 120, finishing her event in 24 minutes, 44.01 seconds. The silver going to Sakshi Thakur of Himachal Pradesh, and the bronze going to Natasha Meher of Himachal Pradesh, who finished her event in 25 minutes and 36.01 seconds. Now the view of the Pir Panjal mountain range, and we were earlier showing you the Afarwat Peak, where the event of slalom and giant slalom of alpine will take place. Let's have another view, Damodar, of what's actually taking place here. और ये पुरुष वर्ग का जो स्की माउंटेनियरिंग का इवेंट था, उसमें आर्मी के राजेश्वर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता 11 मिनट 4.03 सेकंड के साथ। हरियाणा के पंकज बोस दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें भी पहला स्थान एक तरह से जो टाइमिंग थी बराबर थी, बहुत कम मार्जिन था, 11 मिनट्स
04.04 सेकंड और आर्मी के आदिल हुसैन तीसरे स्थान पर 11 मिनट 04.05 सेकंड के समय के साथ। And that was the ski mountaineering sprint for men and women that we showed, including the gold, silver and bronze, and the other standings. Once again, Indian Army and Himachal and Uttarakhand also on the medals tally as a result of the ski mountaineering sprint event. We'll be back more on Doordarshan Sports.